कांटियन एंड पोस्ट कांटियन थिंग। सो वो इंटरेस्ट का टॉपिक हो सकता है। शुरू कर सकते हैं वहाँ से। अह, हाँ, तो एक चीज जो कहीं ना कहीं कांटियन नोशन में और कहीं ना कहीं जो पोस्ट कांटियन है जो डिफरेंशिएट करता है, वो है द कार्टेशियन रेसिडुअल इन द कांट्स थिंकिंग। जो डिकार्ट का रेसिडुअल था ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाइनरी। और जब कभी भी जो ये डुअलिज्म की बात आती है तो डेकार्ट कहीं ना कहीं बहुत आप जो फेमस है। है और इसकी आप जो है मछली की तरह उसमें क्या अपना पैर आप घुसाए हुए, वैसे मछली की तरह ऐसे आपका पैर ऐसे ऐसे हो रहा है। आप ठीक है। हाँ साइड में चल गए। हाँ हाँ अब हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं ना बाइनरी कहीं क्या? तो वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाइनरी मैं कहूंगा कि एक होता है ना डिजीज की तरह, मैं कहूंगा पूरे थिंकिंग में फैल चुका है। तो इवन दो यू एक्नॉलेज दैट, मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन इतना जगह फैल चुका है कि हमारे इवन प्रीसपोजिशंस में वो रिफ्लेक्ट होता है एंड इट नीड्स टू बी फिल्टर्ड आउट, ऑब्वियसली उसको पूरा क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अगेन उसके कहीं ना कहीं क्या कहते हैं रिप्लाई आ जाएगी, बट स्टिल देयर देयर आर सम वीकनेसेस ऑफ दैट कार्टेशियन टाइप ऑफ थिंकिंग विच कांट, लाइक एडवर्ड सीजी का मैं नाम ले रहा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम, द होल आइडिया ऑफ प्लेस एंड स्पेस, so Edward Says is a philosopher and particularly it's so this Edward Says is particularly famous for his philosophy of spatiality, about अच्छा everything related to space and place, which he terms. So he wrote a book, on the fate of the place, basically on the history of spatial thinking, like how the thinkers thought about place or space in the Western philosophical system, obviously not the Eastern one. And it would be interesting if India had some sort of Edward Says, because the way he has brought every philosopher, like every famous philosopher at least, starting from the best thinkers of pre-Socratics, as well as तुम्हारे जो स्कूल ऑफ थॉट जो इमर्ज हुए थे ग्रीक फिलोसफिकल सिस्टम्स में, स्टोइक फिलोसफी हो गई, या तुम्हारी मैं नाम तो नहीं जानता हूँ ग्रीक की, लेकिन यू मस्ट बी फेमिलियर। सो अरिस्टोटेलियन या न्यू प्लेटोनिक थिंकिंग। सो ही शोज कि कहीं ना कहीं जो स्पेस की थिंकिंग है इट गॉट वेरी चेंज, एंड ही एक्सप्लेन्स इन टर्म ऑफ स्पेस वर्सेस प्लेस। तो फिर वो बात आती है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक कहीं ना सेकंड, कहीं तो तुम कांटियन और पोस्ट कांटियन व्यू हम्म ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे, फिर तुम वहां से भी स्पेस पे आए हो। I actually went from Kantian and post Kantian framework because मैथमेटिक्स को समझने के लिए वो मेन हमारा डिफरेंस वहीं पे आ रहा है कि फ्रेमवर्क ही क्या है जिसपे मैथमेटिक्स काम कर रही है। सो आई वुड गो ऑन अ बिगर टर्म, लिविंग मैथमेटिक्स rather than a ठीक है। specific. हाँ हाँ, तो तुमने जो है कांटियन और पोस्ट कांटियन फ्रेमवर्क्स में डिफरेंस निकाला कि कांट स्टिल हैड दिस रेसिड्यू ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाइनरी, और नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेशियलिटी which is based on the work of who? Edward Says. इसका स्पेलिंग बताना। CASEY. CASEY। अच्छा केसी होगा फिर, केसी प्रोनाउंस करते हैं इसको। एडवर्ड केसी। हाँ, तो इसका आइडिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है? Yeah, so still one more thing, because मैंने कहा कि I'm discussing the frameworks rather than speciality, because फिर वो भी एक मैं particularities में आ गया ना speciality डिस्कस करके, पर नहीं, क्योंकि what differentiates the kind of specialities
the fight between two kinds of spatiality is the inclusion of the subject in it, कि किस लेवल पे वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की इम्बॉडीनेस उस चीज उस स्पेस में embedded है. So what you mean by the inclusion of the subject is something like when the physicist imagines himself watching an object move, he does not also account for his own act of observation. जबकि तुम कह रहे हो कि in this idea of space, the observer is also present. It is not a perspectival कि observer है, कोई है उस space में observe करने वाला, यही ना? But this thing you said, obviously I would say ये उस डायरेक्शन में जाता है, but the more depth or the more demand कि एक पूरी बुक लिखनी पड़ी about this exact question कि वो सब्जेक्ट इंक्लूडेड कैसे है. लाइक बहुत कहीं ना कहीं फिलोसफर्स यहाँ तक रुक जाते हैं. ओके, द सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द ऑब्जर्वेशन स्टेप. द सब्जेक्ट इज मे बी at present at the whole matrix of spatiality, but you have to explain how it is embedded in that. The question of how leads to many versions, and this is exact point to an extent Kant भी कह दिया था कहीं ना कहीं by the Copernican turn कि obviously अगर space and time pure intuition है, if I'm referring him right way, subject का, then subject is itself involved in the spatial structures, but he एक just सेकंड said तुमने इन्वर्ट कर दिया. The subject is not embedded in these spatial structures. These spatial structures are embedded in the subject. Yeah, exactly, sorry. But still Kant was very stopped at this point. मतलब he did not explain. And इसका दो एक और उसका पार्ट है कि कांट अपने आइडियाज को इसलिए शायद एक्सप्लेन ना कर पाया एक प्री कांटियन फ्रेमवर्क की वजह से. ही स्टिल यूज्ड टू डू द कैटेगरीज, एंड मैं कहूंगा अपने टर्म्स में वेरी इनर्ट काइंड ऑफ टर्म्स. ठीक है, क्योंकि जब सब्जेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो सब्जेक्ट स्पेस क्या है, कहीं ना कहीं एक कार्टेशियन पर्सपेक्टिव से बहुत इनर्ट दिखती है. ठीक है, कार्टेशियन ज्योमेट्री भी इनर्ट दिखती है, इसकी एक पोजीशन है. ठीक है, और कांट क्या करता है, कांट इन्वर्ट कर देता है. नहीं, ये जो स्पेस है तुम्हारा सब्जेक्ट में है. इफ आई एम करेक्टिंग हिम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग, सॉरी, इफ आई एम रेफरेंसिंग हिम इन अ राइट वे. बट कांट की प्रॉब्लम ये थी, ठीक है, ये चीज सब्जेक्ट के स्पेशल वर्ल्ड में rather than the opposite thing. बट फिर वो बात होगी कि तुम्हारा सब्जेक्ट तो एक कार्टेशियन ऑब्जेक्ट की तरह न्यूट्रल नहीं होता. न्यूट्रल इन द सेंस इन अ वेरी इनर्ट. द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज अ वेरी डायनामिक थिंग, एंड दिस इज एग्जैक्ट द प्लेस वेयर आई थिंक Kant stops. And the criticism of the Kant even began from the Schopenhauer and Hegel. There's a very famous Zizek joke on Kant. He says, Zizek के बारे में तुम जानते हो? Slavoj Zizek देखे होगे कभी, एक आध तो लेक्चर देखे होगे. बहुत अच्छा. He says Kant is like that man who flirts in a party with a masked woman. वो जो मुकाबरा वाले पार्टीज नहीं होते जिसपे से शक्ल पे वो लगा के जाते हैं, इंडियन सीरियल्स में बहुत कॉपी किया जाता है कि अरे ऐसे वो लगा के जा रहे हैं. इवन हमारे फॉरेन, हाँ उस टाइप का जो वो जो मुकाबरा ही कहते हैं शायद उसको. So Zizek says Kant is like that man who flirts with a masked woman in a party only to in the end find out that he was his wife, that she was his wife. So Kant flirts with a woman who is supposed to be not his wife, who is masked, only to find out that she was in fact his wife. So he flirts with all of these ideas of the primacy of subjectivity, या फिर the cracks in reason, या फिर तुम्हारा ideas about morality. And then at the end he goes back to those traditional Christian ideas, which is the subject being something that is not in direct involvement with the world, या फिर reason being something which, well, whatever, so on and so on. Not referencing Zizek यहाँ पे, पर हाँ. And using your words, it seems like one problem which again the Kant inherits from the traditional idea is about the separation points. Because जब तुम कह रहे हो कि subject is separated from the world, that separation
denotes a sort of relation, ठीक है ना? और फिर तुम जब उसका रिलेशन इम्प्लाई कर रहे हो तो वो फिर मुझे कार्टेशियन रिलेशन दिखता है। कार्टेशियन रिलेशन की कहीं ना कहीं बहुत खूबी थी। शायद बाकी फिलोसफिकल पैराडाइम्स में जाएंगे तो वो शायद खो ही जाए कि it created a binary in which there was a stark opposition and discontact between two things, which is the subject and object. And Kant ये inherit बहुत किया था, even though वो कहता है कि this is in subjectivity, but उसके style of philosophizing से लगता नहीं है कि ये subjectivity के अंदर है, क्योंकि if this object is going to be under the subjectivity, it is going to be very dynamic. और ये बताने की जरूरत नहीं, एक बच्चा को भी पता है उसके सोच, उसके इनर वर्ल्ड व्यू, द सो कॉल्ड इनर वर्ल्ड इज वेरी डायनामिक इन कंट्रास्ट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड. सो going back to Edward Casey, let's have a big overall viewpoint about the whole 2500 history. So initially वो start करता है Archytas axiom से, and it is a very interesting axiom. It says that to be is to be in a place. How do you interpret it? To be is to be in a place. Well, if I interpret it strictly in a Cartesian way, then to be in the first place is to think, right? That's one thing. But then if to be means to think, then to think means to be in a place, and to think means to be in a place perspectively, but also more deeply. To think is to be in a certain way which is not how you would usually be, like not how an animal would be. So an animal, strictly speaking, wouldn't be, because for the animal, for a dog, their whole life goes out in a flash. How? Well, because they're not thinking about their thinking in a sense. Or ye tumhara, Lacan actually recognized this a major flaw. मैं video वो mention करूँगा, मैं तुमको भी भेज दूँगा, तुम देख लेना कि the I think therefore I am in Descartes is actually talking about two different I's, and he's confusing them. And so this inner I is never really something that can be referenced by using the symbolic order. And so if animals are solely constituted of that inner I, there is no outer I, which we call the so-called ego. So if there is no way for them to think, so in a way there is no way for them to be, there is no place for them to be, which in a sense does make them तुम्हारा Cartesian automata. Descartes का view था कि animals are just machines. But of course I'm not taking away consciousness or anything from them. It's just that they're not in a place in this interpretation of mine कि to be is to be in a place, and to be is to think. Well, to think is to be in a place, a certain place. And so, well, I would take this to tumhara, this idea of a displaced sphere. That is the place where you are. So how's this for interpretation? For an interpretation? I would say that this particular line of thought I shared with you, मतलब हमने पहले भी discussion किए थे, but for this time, we have to go back, to the original, because they actually thought in a different way. So the semantics was a bit different, which was, they maybe it is the reason they did not thought so manipulatively, which Lacan very does. उसकी logic भी बहुत एक तेरी मेरी एक term था, एक Lacan का secondary literature में वो हुआ था कि that it is not an irrational logic, it is a different sort of logic, और वो twisted synonym कह सकता हूँ. So here it is. Lacan writes, I think where I'm not. मैंने तुमको share भी किया था. I think where I am not. The idea of the displaced viewer. I think where I'm not. Therefore, I am where I do not think. ठीक है? I think where I'm not. Therefore, I am where I do not think. I am not wherever I am. I am wherever I am. Acha, a second. I am wherever I do not think. I am not wherever I am the plaything of my thought.
get this again. I am not wherever I am the plaything of my thought. So when Descartes says, I think, therefore I am. Okay? So when he says, I think, so this I itself is a plaything his of his thought. Therefore, he's not really there where he thinks he is. He's not really there for the reason why he thinks he really is. Again, I'm not wherever I am the plaything of my thought. I think of what I am where I do not think to think. This even I do not understand at this point. But this is the twisted logic. Repeat करना. ठीक है. By the way, just Last to one. complete the phrase, this is the twisted logic of Lacan. फिर से मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ. I think where I'm not before I am where I do not think. I am not wherever I am the plaything of my thought. I think of what I am where I do not think to think. I do not think to think. इससे मुझे एक याद आता, लाइक इट वाज अराउंड सितंबर और समथिंग. आई वाज टॉकिंग टू यू और मैंने एक बात कही थी, यू नो, दैट आई हैड दिस आइडिया ऑफ स्पेस एंड नॉन स्पेस, यू नो, कि the space is something where we do not lie, you know, and it is the non space which is the realm where, you know, the subject lies. So on the twisted part, like as of now I don't have to comment because I expected this from Lacan, but I do not still know him that much to have a comment. Wait. But you see, wait. Look, of course, if you go to someone like Chomsky, you can say, "What is this gibberish? It does not make any sense." Okay? But if you are someone like us who tries to make sense of whatever he's saying, then you can see, there is some sense. It's just that I'm not able to grasp the entirety of it. You know that. And there's another thing which relates to this, jo ki hai, he writes again, tumhara, this is in a preface to the English edition of Seminar 11, okay, 4 Fundamental Concepts of Psychoanalysis. I'm not a poet, but a poem. One that is being written, despite giving the appearance of being a subject. So this relates to his idea of I'm not speaking, I'm being spoken through. The language is not something which, is in our control. It's like language controls us. We are subject to language. You can go on. Yeah, like it is this sort of intuitive thinking. मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इतना articulative था. Obviously, इसलिए Lacan refer करते हैं. It is exactly this sort of thinking which I, a bit got away from the Indian philosophy, because कहीं ना कहीं the biggest critique of Indian philosophy of the Atman concept की वो बहुत सीधा concept है एक तरीके से. It does not explain this sort of twistedness of thinking subject which Lacan emphasizes, and it is something which Indian philosophy needs to work so much, because it is so much confident of itself that it is forgetting that how much of nuances of subjectivity. But perhaps, although I do not know anything, I mean, बहुत ही basic मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा when Shankaracharya, the way he talks about it, don't you think he tries to incorporate that twistedness? Yeah, मैं forgot कर दिया. Perhaps his that is why languages. Perhaps that is why he's so misunderstood. He's going here and then he's going there, but really what he's trying to do is incorporate that sense of twistedness. But then again, he did not have that sophistication. And also, we should point this out. He did not have that sophistication, but on top of that, he did not have 100 philosophers before him trying to attempt to explain what subjectivity is and failing miserably, like professionalism. ये देखो ये लोग कैसे बैठे हुए मस्त एकदम अपना जो है हाँ तो क्या कर रहा था मैं, यस, कि तुम्हारा कि अनलाइक Lacan, ठीक है, Shankaracharya did not have 100 Indian philosophers before him talking about subjectivity in such great depth. I mean, of course they had, but obviously not to that degree, okay? And failing miserably, so that Shankaracharya could see, okay, there's something about the very language of this, there's something about the very structure of this that is going wrong.
right? Which is why perhaps he used that sort of contradictory language instead of a twisted. So there's a difference, I think, between contradictory and twisted, right? Which Lacan did. Yes, go on. And it is interesting कि इस तरीके से if you see Shankara, what made him different, that for him, the concept of Maya or Avidya was not a wrong or negative concept. He thought of Avidya as, a sort of deceptive tool, but which is the source of epistemicity. It is a simultaneity or superposition of deceptivity, twistedness, as well as the epistemic powerhouse. And this is something, whose it is idea very is this? ingenious. Shankara, like obviously I felt intuitively. तो इसको अच्छे से समझाना, थोड़ा मैं समझा नहीं. Like if you read Shankara, what he does, one thing, even though he was not able to articulate things, but one thing he was clear, he made an idea of Avidya and the Maya, and previously it had concepts, but he totally framed it in a new manner. How? Like one thing which was common, that Maya is sort of illusion. This interpretation of Maya as illusion or something near to that was dominant. You cannot neglect that Maya is not illusion, like modern philosophers claim. It is a very nuanced thing. It was not before Shankara, it is after Shankara which is. So he puts it in the framework of Brahman Maya relationship. He says that, again, that obviously the Brahman is truth, okay, but again, when you try to interpret things for the truth, it is always about this idea of filterity. Let's say you have two things, sugar and water, and you can, if you identify two things, then obviously they should be filtered, this filterness, and this whole idea of filterness which cannot be done in this relationship of Maya and Brahman, and it seems to be a Go on. Yeah, it seems to be a very empty idea, but it is very like it is something you have to work upon. Why? Because the type of relation consists in a breakage, in a potential breakage. Let's say sugar and water can be broken down. It is one of the inherent characteristic of the relation sugar and water have, and most of the relations in the world have this source of future decoherency as a potentiality. But what Shankara is saying, in this relation of Maya and Brahman, you can't have Maya has yeah. एक सेकंड, जब भी मैं अपना हाथ उठाता हूँ तुरंत मत रुक जाया करो, खत्म कर लिया करो. मैं बस इसे उठा रहा हूँ ताकि तुम समझ जाओ कि whenever you stop then I'll ask something. तुमको खत्म करना है वो कि मैं पूछूं जो मुझे पूछना है. मैं समझ नहीं पाया वो what's this idea of if I have sugar and then I have water. Do you mean कि if I am able to differentiate between sugar and water, there has to be some sort of an internal filter which I impose upon the entities called sugar and water ताकि मैं differentiate कर पाऊँ? मतलब ऐसे कि अगर मेरे पास मेंटल फैकल्टीज नहीं होते शुगर को वाटर से डिफरेंशिएट करने, मान लो मेरे पास टेस्ट बड्स नहीं है, ठीक है, टेस्ट बड्स नहीं है, तो क्या मैं चीनी पानी को और नॉर्मल पानी को डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? नहीं. सो दैट टेस्ट बड इज अ सर्टेन फिल्टर. डू यू मीन दिस और समथिंग एल्स? नो आई एम मीनिंग इट इन अ सिंपल मैनर. देयर आर टू थिंग्स, ठीक है. ये एक डिल्यूजन आइडिया कि डिल्यूजन क्या करता है, डिफरेंसेस को या रिलेशंस को एक स्पेक्ट्रम. डोंट मिक्स दिस. नहीं, हां, ठीक. सो कमिंग बैक, बेसिकली दो थिंग्स. आई एम सेइंग दैट देयर इज शुगर, दैट्स इट, एंड देयर इज वाटर. तुम उसे मिक्स करते हो तो तुम उसको साथ में पी सकते हो, ठीक है. यू टेस्ट इट साइमल्टेनियसली, ठीक है. बट इस रिलेशन में एक होता है ना पोटेंशियलिटी कि हाँ दोनों रिलेटेड हैं बट दे आर डिफरेंट, देयरफॉर दे आर रिलेटेड. अदरवाइज कोई चीज अपने आप से रिलेटेड कहना वो एक टॉटोलॉजिकल वे होगा, ठीक है. तो ये रिलेशन के अंदर ही एक इम्प्लाई करता है दोनों अलग है, और ये दोनों अलग फिर से हो सकता है. मैं उसको ड्राई कर सकता हूँ, सन के सामने रख सकता हूँ, चीनी क्रिस्टल के फॉर्म्स में आ जाएगा, ठीक है. सो दे कैन अगेन बी separated out. But the way Shankara is trying to show the relationship of Maya and Brahman, that they can't be, and it is different from the previous philosopher. Why? Because freedom from Maya, and you get to the Brahman. So you got separated from the Maya got filtered out, and you got to realize the true Brahman. And Shankara, for
him it is shit. He always tries to show. You will see, like, for 1 second he will say that Maya was never there. It is in a way that it was totally an illusion. Only Brahman was there. But on the other second, Maya is so much attached to Brahman that it can't be even think. Brahman can even be thought about the Maya. So basically, what he's saying, independent of the Maya, independent, that it is so attached that Brahman entanglement. cannot, entanglement, it is so entangled that we cannot even conceive of the Brahman independent of the Maya. ऐसे रखना चाह रहे हो? Yeah. हाँ, फिर So where was I? I was connecting it to Lacan. So this twistedness, I lost my train of thoughts. Like, कि तुम कह रहे थे कि Indian philosophers do not have this. Indian philosophers do not have the sense of twistedness. Then I pointed out that Shankaracharya did have this sense of twistedness, but not, but perhaps he manifested it in ways of contradictory language instead of twisted language, जो Lacan करता है. One of the reasons, by the way, I get this. तुम देखोगे, the justification of continental philosophy is pretty much the fact that you have to necessarily involve that twistedness into your philosophy to showcase how things are entangled, instead of trying to pretend that everything is clear and everything can be conceptualized. And so the obscurity of Lacan, although it is also credited to the kind of French culture, तुम्हारा जो intellectual culture होता था उस time पे, it was, मैं तुमको बताया हूँ कि obscurantism का culture था, लेकिन also to some extent they used language in a particular way, in a certain metaphorical way. अभी आगे बढ़ने से पहले I still do not understand, या फिर it's not like I do not understand, मुझको और तुमसे पूछना है कि this तुम्हारा शंकराचार्य का idea on Maya and Brahman, ठीक है, इस पे थोड़ा सा elaborate करो, because clear नहीं हुआ है. I just know of the fact at this point of time कि ठीक है, Shankaracharya said कि you cannot talk of the Brahman independent of Maya, and then at the same time there never was a Maya in all of all of this. लेकिन इसका give me a few justifications, reasons, grounding. So there is this famous poem, Nirvana Shatkam. So the poem is like that. Let me read out. That poem is very short and famous, so it will be clear. Screen present कर दो जहाँ से भी read out कर रहा हूँ. So this is, I am not the mind. I am not the mind, the intellect, the ego, or the memory. I'm not the ears, the skin, the nose of the eyes. I'm not the space, not earth, not fire, water, or wind. I am the form of the consciousness and place. I am the eternal Shiva. So, one thing is, about the Shankara kind of philosophy, it is known as monistic, or बहुत सारे इसके terms होते हैं, pantheistic, ठीक है. So इस kind of philosophy की feature होती है that they are all compassing. स्पिनोजा का गॉड ले लो, वो नेचर ही है, वो हर चीज है इस तरीके से. हाँ, पर then again pantheism और तुम्हारा monism are two different kinds of things, right? कि pantheism is about a certain kind of theism. What kind of theology? What's the nature of what's the ontological nature of your theology? Whereas monism or pluralism or dualism would mean what's the kind of metaphysical ontology you have. तो वो थोड़ा सा differ करेंगे, but yes. But monist है. Monist essentially means like this oneness. Ultimately things have to be either reduced or united. Reduced is a bad word. United to a single thing, not singular. Singular would be problematic term. Single thing. So this is the context for monist. कि Shankaracharya's thought is monist. तो अब इस पे तुम कैसे build करोगे आगे? हाँ, लेकिन then if you see the first 3 lines, he has rejected everything. I am not everything. I am not the mind, the intellect, or the ego, or
he even talks of the subtle layers. मतलब तुम जितने भी एक होते हैं ना, का डिकार्ट नहीं, सात्र करता है, ठीक है, प्री रिफ्लेक्सिव कोगिटो, पोस्ट रिफ्लेक्सिव कोगिटो. So he is going to separate out every form of क्या कहते हैं उसे, रिप्रेजेंट नहीं, विच कैन बी प्रेजेंटेड, ठीक है. तो ही इज एक्चुअली रिमूविंग आउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रकृति, ठीक है. प्रकृति एंड पुरुष इज, फिर वो बात आती है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. मतलब बहुत ही बेसिकली सांख्यन philosophy का framework है. They include this kind of, the Sankhyan philosophy is constituted of a certain kind of metaphysical dualism between तुम्हारा पुरुष and prakriti. That's all. अभी वहीं पर रुक जाते हैं. That's all. हाँ तो या सो यहाँ पे फिर वो बात आती है कि फर्स्ट 3 लाइंस में उसने हर चीज को रिमूव कर दिया, यू नो, एंड ही गोज ऑन टू क्लेम दैट आई एम द कॉन्शियसनेस, ठीक है. सो मे बी तुम कितना भी नुआंसेस की बात कर लो, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस या अंडरस्टैंडिंग जो जिससे लगेगा अच्छा कोई डिफरेंस तो है ना उस कॉन्शियसनेस में, और विच इज नॉट देयर, यू नो, माइंड इंटेलेक्ट वो सबसे अलग है, ठीक है. या कोई ऐसे कह सकते हैं कि लेट्स से दे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दोनों के शैडो बन रहे हैं, ठीक है. तो एक होता है ना कि जैसे ये दीवार है, ठीक है, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो अगर मैं एक बॉटल रखूंगा तो ये देख रहे हो कि इस बॉटल के शैडो इस दीवार पे भी बन रहे हैं, उस पे भी बन रहे हैं. तो अगर दो बॉटल रखते हैं, दोनों के शैडोज बनते हैं, तो दोनों के शैडोज अगर एक दीवार पे कॉमन बन रहे हैं, दूसरे पे ना बने, ठीक है, तो ये एक चीज शो करता है दो डिफरेंट चीजों की, दे कैन हैव देयर पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है. जरूरी नहीं इफ टू थिंग्स आर डिफरेंट दे विल बी डिफरेंट टोटली. दे कैन हैव देयर पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज, बट दे कैन हैव द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस एज वेल, यू नो, यू कांट स्टॉप आउट. तो सिमिलरली इससे कोई इमेजिन कर सकता है अच्छा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता होगा, ठीक है, कि जहां दोनों इंटैंगल्ड हो जाते हैं, ठीक है. बट कहीं ना कहीं ऑथर कहीं ना कहीं या रीडर कहीं ना कहीं इमेजिन करता है कि अच्छा एक पॉइंट तो होगा जहां वो अलग होंगे. और ये चीज इंटरप्रेटर्स को बहुत तंग करती है. दे वेरी मच ट्राई टू फाइंड वेयर actually the consciousness is not the mind, and Shankara will frame the philosophy in such a way that they cannot find. I mainly say two things of importance. First, that if Shankara is saying the consciousness is not the mind, remove all the other examples, obviously is going to have certain twisted philosophy. So he will say that in some forms consciousness becomes the mind, like the dream. Obviously I'm not my dream, but at some point when I'm dreaming I'm all those dreams, but still there comes a point like when I'm waking up I have no relation to those dreams. It is similar to the example of bottle कि कुछ point of similarity है लेकिन कहीं ना कहीं तो dissimilarity होगी, तभी ना अलग हूँ, ये एक प्रूफ होता है. So people try to find the same for the consciousness, that there is some point, like मेरा था कि मैं जब waking up state में हूँ तो मेरा ड्रीम से कोई रिश्ता नहीं है, तो ड्रीम और मैं अलग हो गया ना कहीं तो एक टेम्पोरल स्पेशियो और कोई भी वर्ल्ड में अलग थे. On a similar note, they try to find like this pure consciousness which is not at all mind, and Shankara will not give you the opportunity to, you know, give that, you know. हर पॉइंट पे जब तुम्हें लगेगा अच्छा कॉन्शियसनेस प्योर है, एंड ही विल एक्चुअली इन हेगेलियन मैनर मे बी he will show that both are actually entangled in a very deeper way. Now whenever you तो कोई एग्जांपल दो, जैसे कोई एग्जांपल दे, कोई एक सेकंड, एक तुम जब भी मैं दूर रहता हूँ उससे मैंने नोटिस किया मेरा ऑडियो सही से नहीं आता है. हाँ, कोई एग्जांपल दे सकते हो तुम? एग्जांपल सच बताऊं तो अभी याद नहीं आ रहा, बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हो गया इंडियन फिलोसफी पढ़े, तो कुछ भी याद नहीं मुझे. किस तरीके का कुछ हिंट्स दो, जैसे टू शो कि तुम्हारा what you think of as pure consciousness and what you think of as, well, not consciousness, are actually in some deeper sense entangled. I mean, one is of course what we discussed
तुम्हारा पिछले वाले conversation में, which is the idea that idealism, the idealist point of view, which we think to be, you know, um, whose ontological essence we take to be consciousness, you know, there's just consciousness, is in fact derived out of a physical conception of reality. That could be one of a more naive examples. बाकी अगर तुम सोच सकते हो तो सोचो. Or else I have perhaps a question of a sort, which is, does this not sound a lot like Parmenides? At least the way, मतलब मैंने ये पहले भी encounter किया है this, if it's a poem, then the poem, you know, because essentially he's negating everything in favor of some eternal thing, in favor of some being that really is, truly is, absolutely is, permanently is, unconditionally is. बट यहाँ पे वन थिंग, या तुम इवन पैरामेनिडीज क्या लेते हो, लाइक इंडिया हैड द मोनिस्ट फिलोसफर्स फ्रॉम 1500 BC. Okay, so again, if there is some interest in Shankara, there should be some difference, like what separated Shankara from early monist Indian philosophers. कि जैसे तुमने कहा कि the monist always try, या Parmenides always try to link everything with some eternal thing, but I don't feel the same with Shankara. Like कोई एग्जांपल ले लो ना, जब कब ऐसा पॉइंट आता जब ब्राह्मण ही सिर्फ रहता, whenever this but he says I'm the eternal Shiva, I'm the form of consciousness and bliss, I'm the eternal Shiva. He does associate the idea of being eternal with Shiva. I'm the form of the consciousness and bliss. I don't know, मतलब शायद मैं context को ला नहीं रहा हूँ, लेकिन it does not at all sound to me, this thing empties. ये हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. अद्वैता को मध्यमिका से बहुत जोड़ा जाता है, and it is very famous thing. They were in dialectic. That Shankara's Brahman is very much equatable with Nagarjuna's Shunya. Okay, so हाँ, so this whole change illusory world, illusory कहना तो गलत होगा, but the Maya is very much similar to the dependent origination वाले world of Nagarjuna. Okay, but Nagarjuna's Shunyata, ठीक है, is everything which Shankar tries to tell. One thing which makes Shankara different from Nagarjuna is कि नागार्जुना कभी उसको एक वर्ड देता ही नहीं है, एंड शंकरा गिव्स दैट ऑप्टिमिस्टिक. नागार्जुना उसके स्टाइल को इज्जत देता है कि अगर वो है ही नहीं, अगर वो प्योर नेति है, तो मैं उसको वर्ड देके तो सबसे बड़ा नेति का अपोजिट कर रहा हूँ. बट शंकरा, some people of Shankara's area say, Shankara is very much courageous and he goes on to explain things. But in a very much sense, Shankara's Brahman is very much like शून्यता. शून्यता कोई चीज नहीं थी. नागार्जुन ने एक बात बोली थी कि शून्यता को भी पॉइंट मत बना देना, then it would be worthless. So Shankara is always like this. शंकरा का ब्रह्मन का कभी मीनिंग ही नहीं था, और जब वो कहता है in the form of the consciousness, like to a great extent it is filled with emptiness. So in this way, हाँ, इसको एक और लाइन में इंटरप्रेट कर सकते हो. वाज नागार्जुना शून्यता एन इटर्नल कॉन्सेप्ट. अगर नागार्जुना शून्यता की बात करता है, क्या वो कोई इटर्नलिज्म में जाता है कि नहीं, और हमेशा वो but then again we cannot possibly talk about it because Nagarjuna himself restricts us from doing so, so it does not make any sense, does it, कि हम लोग बात ही नहीं कर सकते उसकी. But in any case, Shankara does talk about it. He says I am the eternal Shiva. अब देखो एक चीज तो मैं ये I can grant him one thing, which is, let's say he was and I truly believe he was as smart as someone. This could be a very disrespectful parallel, लेकिन ठीक है. Perhaps he was smart enough to make Lacan's observation. I won't say he was as smart as Lacan, that would be disrespectful. Let's say
he was smart enough to make he was smart enough to make Lacan's observation, which was key. When say Descartes talks about I think therefore I am, the I that he's talking about is not the same I as the I he seeks to prove. The I he seeks to prove, you know, cannot be proven in this way क्योंकि आप assume कर रहे हो. This is what Fekta and Nietzsche point out कि I think therefore I am, but the I is already assumed कि well I am thinking. Well then there already is the I thinking, isn't it? So it's more like कि I am because I am, and that is what Fekta plays upon कि the self posits the I. The very first thing that the self does is to posit the I. Without it, thinking isn't possible for the thinking subject. So maybe this underlying कह सकते हैं non-symbolic I, which is a great violation क्योंकि मैं अभी भी symbol दे रहा हूँ. It's just a negatory symbol, but for the sake of our understanding and perhaps the people who can understand, without going into the kind of contradictions it leaves room for, the non-symbolic I is what Shankara is talking about here, and that I can grant him. That is the only way out of this. Varna this to me seems only like a sort of a contradiction, या फिर something like Parmenides' ka thought, which only ends up in a non-productive epistemic vacuum. It talks about nothing. It's like, अच्छा ठीक है, मेरा कमरा सही में क्या है? Well, मेरा कमरा सही में क्या है? This phone is not my room. I am not my room because I often go out of my room. This bottle is not my room because it leaves the room. This table is not the room. The bed is not the room. My picture frame is not the room. The fan is not the room. These two people are not my room. तो फिर room सही में क्या है? Room is some abstract thing which really exists unconditionally, unchangeable तरीके से, absolutely. And that is nothing. So you're equating the room with nothing. So if it is not the earlier observation, which was Lacan's observation as well, then at least in my opinion, this reduces to something akin to Parmenides' idea, which is I call it an epistemic vacuum, a descriptive vacuum. That's all. इस पे क्या कहोगे? If you see the Indian context, like if this is some sort of क्या कहते हैं, सीधे शब्दों में कहें तो एक प्रोटेक्शन बैरियर है जो इस काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन से हमेशा बचा सकता है. दैट व्हाट Parmenides वाज डूइंग, he was negating everything, ठीक है, but especially on आस्तिक side they had this sort of notion again, पुरुष प्रकृति हम ला रहे हैं, बट यहाँ पे एक देखना होगा क्यों ये दोनों पैरेलल हमेशा कंजर्व रहते थे. एक साइड तुम्हारा क्या है, दिस कॉन्शियसनेस, एंड एक साइड बहुत सिंपलिस्टिक टर्म में ले रहे हैं, दिस मटेरियल डाइवर्सिटी, ठीक है. सो हाँ, सो तुम्हारा एक जो मटेरियल डाइवर्सिटी है, इट is always going to retain the somethingness. If you just reduce, let's say if you just want to negate, if you just want to be a very empty sort of philosopher, बस तुम प्रकृति को हटा दो एक तरीके से, ठीक है, या प्रकृति को पुरुषा के बिना रख दो. और कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट यही करते थे कि वो क्या करते थे, सेल्फ इज इल्यूजन, एंड उसके वजह से क्या होता था, द प्रकृति अपने आप में डीकोहेरेंट बन जाता था, और जब डीकोहेरेंट बन जाता था वो कुछ भी नहीं बन जाता. दे वर एबल टू रिड्यूस, द क्लासिक एग्जांपल कि बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं, ठीक है, और एक बार लाइट बंद हो जाता है तो हर ज्वेल जो एक दूसरे को इनफाइनेटली इंटरपेनेट्रेट करके रिफ्लेक्ट कर रहा था वो जीरो में सडनली हो जा रहा है, ठीक है. तो दे आर एबल टू रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी इनटू नथिंगनेस, ठीक है. सो हाउ वर दे एबल टू डू इट? ड्यू टू दिस binary relation between the consciousness and the diversity, manifested diversity, ठीक है. And this परेशान करने लगा, क्या कहते हैं, ये आस्तिका साइड को परेशान करता था. व्हाई? बिकॉज अगेन you can say it led us into an epistemic vacuum, but on the other side, if you ask any astika philosopher, they will always conserve this relation in any sort. Like Sankhya will do what,
तुम बोलते रहो. हाँ. So a Sankhya philosopher will do what thing that he will say the Purusha is separate from Prakriti and Prakriti had its own evolution. ठीक है, वो पहले एक क्या कहते हैं some sort of, हाँ, एक 5 layer evolution का example देता है that first was आकाश and then on the second layer it was uh, some sort of a fire. उसको 5 तो तुम जानते होगे ना, आकाश जल वायु करके होते हैं. ठीक है, तो उसका एक इंटरप्रिटेशन होता है कि पहले तो आकाश होता है अ सॉर्ट ऑफ नॉन डुअल स्फीयर एंड देन देयर इज फायर वेयर थिंग्स. फायर क्या होता है, एक दूसरे को इल्यूमिनेट करता है एंड ऑन अ डीपर लेवल इट गोज टू एयर वेयर थिंग्स मूव वेरी फ्लूइडली. मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा अगर मैंने ये जोक तुम्हें बताया नहीं अच्छा. तो लेट मी जस्ट गेट इट आउट ऑफ माय सिस्टम, फिर मैं ध्यान दूंगा. जब तुमने बोला देयर इज आकाश एंड देन ऑन टॉप of Akash, I thought, on top of Akash there is someone named Shweta. हाँ, बोलो. हाउ श्वेताब लाइक आकाश, आकाश कौन? तुम समझे नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं समझ गया, लेकिन ठीक है हाँ, ठीक है. बोलो. हाँ तो on top of Akash there's no Shweta, there is what? नो, ऑन बिलो आकाश आई वुड से. अच्छा, Like below first, Akash. हाँ, या उल्टा जाता है, ज्यादा समझ में आ गया. Your Interesting. immediate perception. Interesting choice of yes, sorry, go on. So perceptually the world seems to be very solid, you know. So पहला layer earth दिखता है. By solidity it refers to the distinctness and rigidity of the things. rigid है, उतना interact नहीं कर रहे हैं. But on a deeper level one sees the water level of things कि नहीं, water कैसा है, कि स्टिल एक रिजिडिटी, एक सेपरेटनेस वाटर इंप्लाई कर रहा है, बट अब एक फ्लूइड हो गया. ठीक है, सो द वर्ल्ड एट अ डीपर परसेप्चुअल लेवल इज फ्लूइड इन दिस वे. बट व्हेन यू गो टू इवन अ डीपर लेयर, दैट इज द थर्ड लेयर विच इज एयर, उसका क्या होता है, जो ऑन्टोलॉजिकल यूनिट्स हैं जैसे वाटर है जो सॉलिड है, वो भी ट्रांसपेरेंट होने लगते हैं. एयर को देखोगे, ऑन्टोलॉजिकल यूनिट्स भी नहीं इतने पावरफुल है ऑन्टोलॉजिकली कि तुम कह सकते हो मैनिफेस्ट है सेपरेटली. नो, दे हैव नो सेपरेट मैनिफेस्टेशन, जस्ट लाइक से क्वांटम मैकेनिक्स. तुम इलेक्ट्रॉन को खोजने जाते हो, नहीं मिलता, वो एक तरीके से एयर की तरह है. अपना अगल बगल के सराउंडिंग्स पे एक एटमॉस्फेरिक इफेक्ट तो लगा रहा है, जस्ट लाइक द फेनोमेनोलॉजिकल ग्रेविटी. बट इफ यू वांट टू पॉइंट आउट इन अ वेरी सॉलिड टर्म्स, you won't find out. So at a even deeper perceptual level, it is like air, but if you go even deeper, it is like fire. ठीक है, फायर में क्या होता है, जस्ट इल्यूमिनेशन ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन. बोलो. अगर जैसे रात है, ठीक है, अंधेरा है, यू जस्ट लाइट ऑफ फायर, other things will get illuminated. Fire won't touch them and do anything. It will just illuminate them. So this sort of very subtle, दूर से होता है ना, नमस्ते, या दूर से इफेक्ट दे देना. नहीं, एक सेकंड. I think you missed it by a infinitely small margin. तुम पूरा सही बोल रहे थे. You took you used the example of fire, which is light. तो फिर तुमने बोला कि दूर से नमस्ते. No. I believe it is so imminent. I once thought of this idea कि perhaps God has made himself so trivial to us that we do not even recognize him anymore. So in a way, when we look at objects by using light, मान लो कि तुमने आग जलाई, ठीक है, तुम सब चीज देख लोगे, लेकिन तुम अब आग के एग्जाम्पल में श्योर यू कैन लुक एट द वेरी lighting of the fire, but think of a torch light. जब तुम लाइट से चीजों को देखते हो, you can look at everything but the light. So it's not like light is not present there, and in the very act of looking at things through light you cannot look at light, but it is the very fact that नहीं, let's not involve that. बहुत problematic हो जाएगा. It's a very basic तुम्हारा physics का fact कि बच्चों, you look at objects, you cannot look at light cannot reflect off of itself. And so this idea it is so imminent in our vision of in our recognition of objects visually, लेकिन it is the very sort of a precondition, but we have to take it in another way कि हम लोग हर एक चीज देख रहे हैं लेकिन लाइट को नहीं देख पा रहे. We think कि हम लोग लाइट को देख रहे हैं when we are looking at dust particles, but really those are dust particles, not light that we're looking at. We think we look at a beam of light, but we're forgetting what we're really looking at is an aggregation of dust particles.
तो वो एग्जाम्पल आई थिंक अप्रोप्रिएट होगा, बट ऑल्सो विद अ सर्टन एटीट्यूड कि इट्स नॉट लाइक कि अरे दूर से नमस्ते हो रहा है, इट्स सो इमिनेंट कि it's managing to escape. Does that make sense? Yeah, like I would say कि जब you go past the third layer which is air, तो वहाँ पे एक ऐसा change होता है ना that it starts to give problems to the philosophical language. क्या Mm-hmm. कि what happened in the air? Water में you were able to recognize where the object is. हर चीज है, फ्लूडिटी है. एयर में क्या है, अब मैं बता नहीं सकता हूँ एयर का ये मॉलिक्यूल कहाँ है. ठीक है. तो इसके साथ हमारी जो आदत होती है किसी चीज को भी डिस्कस करने के लिए, वी डिस्कस थिंग्स बाय पॉइंटिंग आउट टू द ऑन्टोलॉजिकल यूनिट्स. ठीक है, ये तुम्हारा चश्मा है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये मेरा हेयर है. तो हर तरीके से लैंग्वेज इतना बना है ना कि उसको एक ये चाहिए स्टेपिंग स्टोन नहीं, एंकरिंग पॉइंट चाहिए. एंड पोस्ट एयर मोड में वो एंकरिंग पॉइंट्स कोलैप्स हो जाती हैं, बट द पावर इज नॉट कोलैप्स्ड. तो उसके बाद हाँ, मैं कहूँगा कि द वे यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिलेशंस माइट बी ट्विस्टेड. जैसे तुम जिस तरीके से बोल रहे थे, शायद मैं वही बात को दूसरे तरीके से बोल रहा था. Mm-hmm. अपने आग वाले एग्जांपल से. Yes, but I would think perhaps the thing that you're missing was, or maybe the thing that you were almost misrepresenting was that there's this distance between what is missed and what is represented. I would say that there could be a possibility where, or we could also think of it in a way where the thing that is missed is so deeply present in what is there, it is precisely by the fact of such overwhelming presence कि we are missing it. तो तुम देखते होगे कि कुछ images होते हैं कि spot a picture in this image, and then typically तुम क्या सोचते हो कि oh there must be some little thing, कोई छोटी सी चीज होगी इसमें जो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ. बट देन यू रियलाइज कि एक सेकेंड, उस इमेज में वो इसे नीचे नहीं छुपा हुआ था, इट वॉज द वेरी पैटर्न दैट द इमेज वॉज क्रिएटिंग दैट आई हैड टू रिकॉग्नाइज. तुम पर्टिकुलर्स में इतने घुसे हुए थे कि इट इज precisely by that the presence of that universal image, जो एक जनरल इमेज है, पिक्चर की ही इमेज है, वो इतनी ओवरवेलमिंग थी तुम्हारे लिए कि तुम पर्टिकुलर्स में ही रह गए. सो इट वाज नॉट लाइक देयर वाज सम डिस्टेंस बिटवीन दिस लार्ज पैटर्न और द पर्टिकुलर्स ऑफ दैट पैटर्न, बट द फैक्ट कि तुम उसी पैटर्न के पर्टिकुलर्स में घुसे रह गए. आई विल नाउ मेस दिस अप, अगर मैं और बोलूंगा तो तुम समझ गए होगे इस पॉइंट तक. पर बस तुम मुझको वही चीज कैसे करो. यही कह के कि even I'm forgetting कि तुम ये आग वाला एग्जांपल किस लिए यूज कर रहे थे कि there's something that is escaping. No, I was saying that the relation at a distance, मतलब लेट्स से, मतलब अगर एक सॉलिड फ्रेमवर्क में आते हैं, तो अगर इसे किसी चीज को इफेक्ट करना होगा तो इस दोनों को पास में होना. yes, you were talking about air and then you were saying कि कि this idea of दूर से नमस्ते, and all I meant to say was कि perhaps there's no दूर से नमस्ते, there's pass से हमेशा आप कैसे हो so many times that you forget the meaning of आप कैसे हो. You just take it as just a casual term. And a person, when they, I mean बहुत ही literally मैं ले रहा हूँ, when a person asks you for the first time how are you, you really take it with a certain weight. Okay, ठीक है. But if a person, how was your day, there's a certain weight. But if that's being asked every day, then that loses its significance, not because there's some distance now, but precisely because there's such overwhelming presence now. Do you see both sides of the coin now? वही बस. तो अब वापस आओ इस चीज पे. आकाश, then there's water, क्या कहेंगे इसको? No. Water, then there is sorry, there is solidity. ऐसे अर्थ रेफर करते हैं. अर्थ, वाटर, there is air, there is fire, and there is आकाश. एक सेकंड, ऐसे एक बार फिर से बताना. अर्थ, फायर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, आकाश. आकाश means ether, but I don't like that term. तो तुम अभी जब शायद पहले समझा रहे थे तो मे बी यू यूज्ड
The terms in the आकाश following. You used Akash first and then you said water उसके just बाद. नहीं नहीं, मैं आकाश बोल रहा था, देन आई सेड दैट आई विल यूज इन रिवर्स, कि मैं अब रिवर्सली एक्सप्लेन करता हूँ, चलो वो ठीक है, मे बेटर भी है। हो सकता है, हाँ हाँ हो सकता है, हाँ। मेरे साइड से हम्म मिसअंडरस्टैंडिंग हुई. सो there's this order. अब इस पे तुम्हें कुछ इलाबरेट करना है, जो तुम इलाबरेट हम्म कर रहे थे, जो तुम बता रहे थे. हम्म सो दिस इज ऑब्वियसली, फिर ये 5 लेयर से एक पूरा इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर बनाता है प्रकृति का, ठीक है। एंड दिस इज पॉसिबल विद द इन्फ्लुएंस ऑफ पुरुषा, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता है कि द पुरुषा इज द पर्सन, मेल, हु इज सिटिंग एट द चेयर because he can't walk, he is paralyzed, but he can see. And the Prakriti is the woman who is blind, but but she can walk, she is not paralyzed. तो एक अच्छा के अच्छा पास अच्छा, आंख समझ. है, एक के पास पैर है। तो पुरुषा क्या करता है, ऑर्डर्स प्रकृति, तुम इधर जाओ, इधर जाओ, इधर ये है, ठीक है। एंड प्रकृति इज एबल टू मूव, तो शी ऑलवेज मूव अराउंड एंड शी डज थिंग्स। सो in this metaphorical way, a Sankhya worldview, shows कि even though they are disconnected, क्योंकि Sankhya very relies on the disconnection of those two binaries, but they are needed for each other. Purusha is very inert. It is just the inert observation, ठीक है। But Prakriti is this dynamic manifestation of things, of optimistic, things. Why one of the reasons why they do not want to reduce Prakriti to Purusha is, this to retain uh, I what I call the optimistic ontology, कि हमारे मेरे सामने जो चीज है उसकी एक ग्राउंड है, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड कोलैप्स हो जाएगी, मैं ये शून्यता में नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ। सो इन दिस वे, द फिलोसफर्स कहते हैं प्रकृति है सेपरेट, उसकी एक ऑन्टोलॉजिकल प्राइमेसी है, एटलीस्ट वो चल सकती है, पुरुषा नहीं चल सकता। सिर्फ तुम पुरुषा को दे दोगे दिस एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज बीइंग इम्प्लाइड हियर कि स्पेशली आस्तिका साइड में, कि हमेशा ये बाइनरीज रहती थी, या ज्यादा से ज्यादा दोनों को इंटैंगल कर दिया जाता था, या नहीं तो एक इस रिलेशन में आ जाता था, एक सुपरसीड कर देता था, बट द बाइनरीज वर ऑलवेज प्रेजेंट। इन दिस वे, जो तुम कहते हो एपिस्टेमिक वैक्यूम, इट वाज नॉट एट ऑल पॉसिबल, आई वुड से। अच्छा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? And this prevented at least the astika side, this thing, this binary, and this preservation of binary. क्योंकि हाँ, लाइक सांख्या में अगर प्रकृति को हटा देता, फिर पुरुषा को सिर्फ दे देता, इट वुड बी दिस एपिस्टेमिक बाइनरी आ जाती। या तो पुरुषा को हटा देता, प्रकृति को दे देता, दैट एपिस्टेमिक नॉट बाइनरी, व्हाट यू सेड, एपिस्टेमिक वैक्यूम. बट इजंट मेरी आवाज मुझको वापस सुनाई दे रही, बाय द वे? हेलो हेलो हेलो. हाँ, अब सही अभी है, अब भी यार। सही है, अब सही है. एक तो मुझको बहुत तेज नींद भी आ रही है, मैं दिन भर में उससे बहुत थक गया हूँ. आज सो जाते हैं, क्योंकि तुम वहां से आए होगे ना आज। In the case of Shankaracharya, however, he's not taking this prakriti or purush ka binary, is he? He's explicitly saying, I'm not this nature, I'm not this, I'm not that, I'm the eternal Shiva. Is it? So he is, but then again, अच्छा ठीक है, हो सकता है कि I might be understanding it now a little better. What he's doing is not negating the existence of whatever he's negating, but negating from his identity these things. I'm not this, I'm not that, I'm not ye wo, I'm the eternal Shiva. But then my question, very in a straightforward manner, would be, do you think क्योंकि मतलब देखो, मैंने इंडियन फिलोसफी बहुत ही बेसिक लेवल पे पढ़ी है, उसमें मैं आई हैव नॉट बीन एबल टू एंगेज विद इट कि मैं नुआंस से समझ पाऊँ. तो मेरे लिए
सांख्य और वेदांता ये दो बहुत अलग schools हैं, और क्योंकि अलग schools हैं and there's a difference of schools, it would also imply a difference in assumptions, and I would not imagine that the Vedantins were Vedantin ही कहते हैं ना, एक follower of वेदांत these. The Vedantin would carry with him the assumptions of the Sankhyan. Do you understand? And so, are you saying that Shankara did uphold those Sankhyan assumptions? Would you say that he did not? Because if you say he did not, then your whole example collapses. There was no point of giving that example then. Because I specifically Shankara के context में बात कर रहा था. And if you say yes, then you'll have a lot of explaining to do. So in both the cases, you have a lot of talking to do. So go on. well, not in the sense of the discrete binariness of Purusha and Prakriti. A better framed question would be कि ठीक है, like there is some work which Prakriti is doing, and there is some division of labor जो सांख्या करता है, ठीक है. So उस division of labor को तुम्हारा अद्वैत कैसे रखता है? It would be Division more of framed what? question. Division of let's say. labor. And you're taking this Hmm. directly from that example of division of labor, as in he who tells what to do and he who does it. He who tells what to do Hmm. is Purush, and he who does it is Prakriti. And so this is the division of labor. Yeah. Acha. And what you're saying is ki I'm saying that what is the case in the Vedantic framework, because these things are to be done for an ontological existence. ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन, एक साक्षी, ठीक है, एक साक्षी इज प्रेजेंट इन अद्वैता एज वेल. ठीक है, यू आर द प्योर साक्षी. साक्षी मीन्स द प्योर ऑब्जर्वर. ठीक है, विच इज द पुरुष ना, बट साइमल्टेनियसली दिस डायनेमिक वर्ल्ड इज अपियरिंग. ठीक है, विच ही सेज इज द माया, इज द अविद्या. जो वहां पुरुष प्रकृति थी, यहाँ पे अविद्या हो गई, माया हो गई. ठीक है, तो in a sense I was, हाँ ये मैंने सोचा था अभी दिमाग में, लेकिन फिर मुझे लगा कि to posit it in this naive way would be foolish. लेकिन ठीक है, तो you just confirmed what I thought कि in a way the Maya is the parallel for Prakriti. या पर फिर अब हम लोग इसमें और गहरे ही घुसते जा रहे हैं, लेकिन then why would we call Maya avidya first of all, and these questions are naive, पर फिर भी मुझे पूछना पड़ रहा है क्योंकि मैं समझ नहीं पाया हूँ अभी तक ये सब चीजें. नो नो पढ़ नो. लेना चाहिए था. रुको 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 सोचने दो और एक और क्वेश्चन कि why use a parallel concept of the Sankhyans in a different framework rather than just adopting the Sankhyan framework itself. समझे? ये फिर पूरी इंडियन फिलोसफिकल हिस्ट्री की एक बात आ वही जाएगी, वही यू नो, वही बिकॉज एक बुक था, नहीं वो सांख्या का ही बुक था. तो उसमें कार्ल पॉटर को जानते हो? ही हैज रिटन अ होल encyclopedia of Indian philosophy. So he met this guy at Banaras. He was doing some graduation, and then he said कि tell me something about Sankhya school of Indian philosophy. So उस बंदे ने रिप्लाई किया, that saint, no, Sankhya is not one of the Indian philosophy. Sankhya is the Indian philosophy. It is the heart of Indian philosophy, and it is because this categorical thinking, this whole evolution of Prakriti is copied in Buddhist framework, is copied in the whole Vedantin framework, whether it is Advaita Vedanta or Vishist Advaita. It is there in Kashmir Shaivism. It is everywhere, so this whole question that why adopt Sankhya, everyone has adopted Sankhya. Just see the Jaina cosmological thinking. It will, like, Mahatattva and पांच layers and all those things, वो पहला सांख्या का दिया हुआ था. So I can't explain this thing because it is, means if anyone is Indian philosopher, he's going to adopt this. And if someone changes this dynamically, उसने पूरी इंडियन फिलोसफी की ट्रेजेक्टरी चेंज कर दी.
and why it was adaptable, because कहीं ना कहीं उसकी uh, the point of disagreement, कि पुरुष and prakriti are separate, but how can they be separate? uh, स्टिल तुम कहीं ना कहीं इम्प्लाई करो अ काइंड ऑफ रिलेशन की पुरुष बैठा हुआ है और ऑर्डर दे रहा है, तो इट इज मेटाफर में भी एक रिलेशन दिख रहा है, बट तुम तो कहते हो पूरा वो सेपरेट है। तो इवन कश्मीर शैविज्म एक इम्प्लाई कर दिया रिलेशन, वो एक डायनेमिक एग्जाम्पल होगा कि वो एक अस्पंदा का एग्जाम्पल देता है, कि you just are in the form of प्रकृति for 1 second and then you are, बहुत नाइव वे में बता रहा हूँ, बहुत दिन हो गया, ठीक है। सो दिस इज हार्ट बीटिंग, एक हार्ट बीट होता है तो क्या, एक अप एंड डाउन होता है ना रिदम का। सो इट इज रिदमिक, यू आर इन द रिदमिक स्टेट ऑफ मोशन बिटवीन प्रकृति एंड पुरुषा। तो वो रिदम कनेक्ट करता प्रकृति पुरुषा को। मैं 1 सेकंड के लिए शिवा होता हूँ, फिर शक्ति हो जाता हूँ। और एग्जाम्पल शैवाइट ट्रेडिशन में मिलता है, शिवा को एक बिंदु से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट मींस दिस कंट्रैक्शन, एंड शक्ति को एक्सपेंशन से रेफर किया जाता है। एंड इन साइमल्टेनियस वे पुरुषा इज नथिंगनेस, इट इज स्पेशल कोलैप्सनेस इन अ वे, एंड प्रकृति इज स्पेशल डायनामिज्म, मतलब वो जितना एक्सपैंड करना करो। सो द शैवाइट ऑलवेज रिलेटेड दिस इन टर्म्स ऑफ रिदमिक वे, कि रिदम में क्या बात क्या होता है कि एक स्टेट पे तुम कोलैप्स पे जाते हो जब इनहेल करते हो, और जब तुम एक्सेल करते हो एक डायनामिज्म, फैलाव को कहते हो, एंड दैट इज व्हाट प्रकृति इज। सो सांख्या वाज totally adoptable, but one thing which people disliked was that purusha and prakriti don't have relation, and एक तरीके से बहुत नाइव होगा, लेकिन उसके अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना दोगे तो अलग अलग इंडियन फिलोसफिकल स्कूल आ जाएंगे। तो तुम्हारा जो है सांख्य वाला पोर्शन खत्म, उस पे कुछ कहना तुमको? नहीं, थोड़ा पहले जाते हैं हम लोग, बहुत आगे आ गए हैं, एक से एक जंप मारते हैं। वही पीछे हम लोग कहाँ पे थे? एडवर्ड केसी में थे हम लोग। हाँ, क्योंकि एक लाइन से खत्म करूंगा। दिस इज द पॉइंट जहाँ तुम शंकरा की बात आती है कि विद्या अविद्या और क्या कहते हैं उसे, ब्राह्मण का क्या रिलेशन है, ये बहुत मैं कहूंगा अभी वो मुझे खुद परेशान किया था, एंड इट इज समथिंग व्हिच नीड्स अ स्टडी विदाउट दैट। सो लेट्स गो बैक टू एडवर्ड केसी एज ऑफ नाउ। तो वेयर वर इन केसी, लाइक कौन सी पार्ट थी? लकान। नहीं, लकान से भी पहले, लकान से पहले आते हैं। हाँ। You asked me to interpret to be is to be in a place. That is what you said. Well, ये जो आर्किटास एक्सियोम है ये बेबीलोनियन में भी मिडल ईस्ट का कंटेक्स्ट है, so they were not that Lacanian, even जैसा तुम बोले। एक सेकंड, of course. नहीं, of course. So let's abandon that part of the conversation altogether, and let's focus on the meat of whatever this is supposed to be. So what's the meaning? What's Casey's interpretation? मैंने तो तुमको अपना interpretation दे दिया in the earlier part of the conversation. अब तुम बताओ मुझे कि what was it that you would have wanted me to say? So जब भी किसी चीज के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, लाइक इमेजिन भी कोई बंदा करता है, एक बच्चा भी करता है ना, तो दिस सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड इज देयर दैट टू बी एग्जिस्टिंग इज टू बी देयर इन अ प्लेस। ठीक है, कोई चीज का एग्जिस्टेंस, लाइक ये एग्जिस्ट करता है तो कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, ये रूम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, लाइक माई थॉट्स एग्जिस्ट, वेयर दे डू एग्जिस्ट। सो दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ द एग्जिस्टेंस is even a precursor to the ontological question. The question of spatiality is even does even precede the question of ontology. Something similar was said by Casey in exact words, कि पहले एग्जिस्टेंस की बात ना करके पहले कहाँ वो एग्जिस्ट कर सकता है, वो प्लेस क्या है, वो मीडियम क्या है जहाँ वो एग्जिस्ट कर सकता है, that is the question. So this question of the place becomes so important, क्योंकि without place you can't
discuss existence itself, and it is one of the problems जो मुझे लगता है कि scientific materialist को escape करने से रोकता है, मतलब their paradigm. Why? क्योंकि अगर वो स्पेस टाइम को हटा देंगे ना, तो उनकी स्पेस खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? अभी तो बता सकते हैं अच्छा तुम यहाँ जीते हो, ठीक है, इस स्पेस में जीतो, like 4 dimensional world. If you collapse, you don't have world. And I would say एक कि सेकेंड बट आई वुड से हम्म, देखो, दिस इज द प्रॉब्लम विद फिजिसिस्ट्स. से दिस इज स्पेस टाइम, ठीक है, दिस इज स्पेस टाइम और स्पेस टाइम एक्सपैंड कर रहा है. सो आइंस्टाइन वुड हैव here to this idea of space time variable a variable which does not determine कि अच्छा ठीक है स्पेस टाइम क्या है, स्पेस टाइम के अंदर चीजें जो रही वो क्या है, बट स्पेस टाइम खुद में कैसा है, which is called the cosmological constant. Now I'm guessing, and again because as smart as I am, mostly I'm right, Einstein took the cosmological constant's value to be zero. Oh yes, he did, he did, he did. This was, by the way, one of his biggest blunders. क्योंकि अगर वो cosmological constant की value positive में ले लेते, तो फिर he would have predicted before तुम्हारा that priest, man. Why do I forget all of these names? तुम्हारा उस priest का Lamatre, the physicist who hypothesized the Big Bang. He would have been the first to do it, even before Lamatre and he before was Hubble. weak at mathematics. Yes, he was. Minkowski called him a lazy dog who never bothered with the mathematics. And it Uh, shows something though. But let the distraction apart. नहीं बोल लो फिर I'll complete. क्या था that he was very theoretical in nature. Like he was very much still like a philosopher. His style was He was. वो mathematics छोड़ता था और you know this philosopher person who is at the pinnacle of the physics. I think he was. Mm, it is. पर उस टाइम पे तुम देखोगे कि सारे ही ऐसे थे. You know, सारे ही ऐसे थे. Everyone was like this. तुम्हारा. Why am I forgetting names ऐसे? Who was the Heisenberg, person? Heisenberg से पहले. Who was the person? Planck. Planck. Planck was Oh Planck my was God. also Planck was also very philosophical. He talked about the giving an account of the observer, and he thought that consciousness was in some sense fundamental to this whole idea of तुम्हारा in this whole matter of uh, quantum physics के Hmm. experiments. तो उस time पे the whole of physics community was still very much philosophical. It is only in the 60s जब तुम्हारा shift आया है, Hmm. when the stars of physics became Carl Sagan and Feynman. हाँ. So Hmm. at that time there was a change. So if the value turns out to be positive, ठीक है, which is the case in De Sitter space, space time itself is curved like this. मतलब कि it's not just like कि space time के अंदर there are curvatures, ठीक है, तो it's much like the idea of ऐसा नहीं कि सिर्फ रोड पे ऐसे रोड ऊपर जा रही है, रोड नीचे जा रही, नहीं नहीं नहीं, जिस चीज पे रोड है धरती वो खुद में कर्व्ड है. यू गेट दैट? Hmm. Hmm. नाउ द आइडिया यहाँ पे जो जो द आइडिया इज, एंड आई केम अक्रॉस दिस वेरी रिसेंटली बाय द वे, तुम्हारा एक फिजिसिस्ट है, यू शुड check him out, Nina Arkani Hamed. He talks of these तुम्हारे physics के concepts by not बेवकूफों की तरह dumbing it down. In short, the idea essentially is that Hmm. space-time itself is essentially constructed or constituted out of something that is non-spatial, non-temporal. And this might blow Hmm. your heads. It might blow your heads. Like this is what the physicist says. He says that essentially space-time itself is emergent in some sense. So you see the level of confusion, emergent, But and then hmm, hmm. non But coming out of non-spatial. I mean, what would it even mean for a physical thing to be non-spatial and non-temporal? That is embedded in the very definition of physicality, that these things are spatial and temporal. You cannot say, oh well, they're non-spatial and non-temporal. But hmm. yes, तुम अपना जो भी comment तुमको add करना तुम कर दो, फिर I'll perhaps say something else. हाँ तो इस एटीट्यूड में भी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना अरे आर्किटास यार कि shit, फिर से हमें मेरी
फिर से मेरा ऑडियो ढंग से नहीं आया होगा। हाँ तुम बोलो। कि they always need a place to sit upon to ground themselves, even वो स्पेशियो टेम्पोरल को छोड़ना पड़े तो छोड़े, क्योंकि इसमें भी वो दिख गया दैट कि ये हमारा कर्वेचर कहीं ना कहीं एग्जैक्ट टर्म्स में जो तुम बोल रहे थे कि एक धरती है वो चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसके नीचे भी एक बिगर अर्थ है, ठीक है, ऑब्वियसली दिस फ्लैट सरफेस इज यू नो सिटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द अर्थ विच इज इटसेल्फ चेंजिंग, ठीक है. So what that bigger earth is doing, it is acting as a place where the topological shifts of that, the smaller place, which is my place, let's say the road is my place, and the road's topological shifts are happening. So you need to explain the topological shifts of the road. So we need a deeper, sort of a space. Like, okay, the earth is changing, the earth topology is changing, therefore the road, it is affecting the road's topology. So ये एक ह्यूमन माइंड की एक हमेशा आदत होती है टू ऑलवेज फाइंड अ प्लेस ऑफ द एग्जिस्टेंस, और ये कहीं ना कहीं ये लाती है. और आई वुड से कि ये जो बात हो रहा है अबाउट द इमर्जिंग प्रॉपर्टी, इसमें भी रिफ्लेक्ट हो रही है ना, लाइक वेयर इज इट कमिंग आउट ऑफ, वेयर इज इट इमर्जिंग ऑफ. इसमें खुद वी आर कंस्ट्रक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्यूचर प्लेस. हमारे क्वेश्चन में ही तो आ गया. अच्छा, ये वेयर का कोई आंसर आएगा तो वो वेयर तो वो एक नया स्पेस बन जाएगा, उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन आएगा कि वो कहाँ से आई होगी. तो इन दिस एटीट्यूड ऑफ वो कहाँ से आई होगी, ये आर्किटास एग्जाम दिख जाता है. We always search for a place, and I don't think it is as clear as them talking about something which will become their space, because they're thinking very phenomenologically, as in when there's a subject and then a subject tries to take place, step inside some other subject, but then the moment it tries to step into some other subject, that other subject is always reduced to an object. तुम समझ रहे हो ना कि अगर मैं बोलूं कि अरे आदर्श की जिंदगी कैसी होती, पर मैं आदर्श की जिंदगी नहीं इमेजिन कर सकता, because आदर्श will always be an object in my subjectivity. My bloody god, I should be closer to the mic. तो you're trying, it seems तुम्हारा वो आइडिया यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट शायद मैं in a more simple way I'm just trying to say कि they are just fundamentally mistaken. They're fundamentally mistaken in using उन्हीं के framework में the very, or let's not go there. Let's not go into how contradictory their intuitions are. At least the physicists I hear and I listen to, and at some point I looked up to. It's in the simple idea of what is a physical entity. A physical entity is something that is situated inside space and time. Right? Because if it is non-spatial, non-temporal, then that's consciousness pretty much. तब तो आप consciousness को भी define कर सकते हो. तो if you're talking about entities which are non-spatial, non-temporal, क्या बात कर रहे हो आप? You're not even talking about physical entities. You're doing metaphysics essentially. And of course, I do not understand it well enough. कि मैंने proper papers नहीं पढ़ रखे हैं कि मैं nuances में घुस पाऊँ. So this is the only remark I can give, but I do think that this remark makes sense, because it is to point out something very basic. It's not like you would take physics के इतना graduate post graduate की knowledge की तुम ये चीज point out कर पाओ. What's a physical entity? Something that is situated in space and time. What are physicists positing? Something that is non-spatial and non-temporal. So that's all. I would say that the study of the that non-spatio-temporal thing which is being done is best being done by the psychoanalyst as well as the certain philosophers which belong to 20th century, and they are very courageous. I deem them very courageous in the sense that they are doing such a work. मैं लकान में नहीं उतना पढ़ा हूँ, लेकिन whenever I read the real of him, it is the way, like one day मैं बात कर रहा था कि मुझे ये inside outside के discussion में ही problem लगती है, that this whole outside is a very of belief, but I don't want to stop discussing the reality itself. मेरे term में वो reality था, and I find नहीं, you cannot do that. तुम्हारे term में reality कैसे था? reality how was the real reality for you? मतलब क्या कहना चाह रहे हो तुम?
No, like when I was trying to discuss, that inside outside, you remember that discussion? तुमने जब research के लिए discussion लाया, तो मैंने हाँ यार, example, मेंशन करो, हम्म मुझे याद आ जाएगा। हम्म सो मैं कह रहा था कि ऑब्वियसली तुम्हारे एक फेनोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू के अलावा तुम दुनिया को नहीं देखते, दैट्स इट, ठीक है। सो द वर्ल्ड कैन नॉट इन अ वे स्केप योर इनसाइडनेस, ठीक है। बट आई आई पोजिटेड समथिंग लाइक एक सरकमफेरेंस का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि तुमने एक सरकमफेरेंस क्रिएट कर दी है, और उस सरकमफेरेंस के उस बॉर्डर के आइडेंटिटी पे तुम एक बाहर और अंदर का एग्जांपल दे रहे हो, ठीक है। एंड दिस होल आइडिया ऑफ सरकमफेरेंस इज बुलशिट। सो इन दैट वे मुझे इन पूरे फिजिसिस्ट के एटीट्यूड, क्योंकि से प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि वी कैन डिस्कस maybe then something which is not at all in my grasp of my subjective power, ठीक है। मैं इस बॉटल को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इन दिस नॉन कंट्रोलेबिलिटी ऑफ बॉटल, ऑब्वियसली इट इज एस्केपिंग मी। आई एम नॉट सेइंग कि ये मेरे बाहर है। जब मैं बाहर कह दे रहा हूँ, वो तो बहुत एक होता है ना ऑब्जेक्टिविस्टिक इमेजिनेटिव वर्ल्ड बना दिया, फैंटेसी की दुनिया। अच्छा ये मेरे बाहर हो गया, नहीं, मैंने कहा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो I have to explain a sort of realism, you know, without going to the objective outside world. ये समझे, like this is sort of my thinking which is going on, or I don't know like how to interpret Lacan's real, but whenever I read Lacan a bit, I see that sort of attitude. The real as a breakage of the symbolic in a way is again that sort of attitude, ठीक है। Or his interest in topologies, or his interest in the knots, those all are example of that thing, ठीक। But I would interpret that as the general, not limited to Lacan, but the general French fascination with, or the continental, I हाँ, would even say, fascination with what motivates us to know. And perhaps it is the very act of knowing which is corrupting what is known. So, for example, I was looking at this, I was मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, उसका क्या कहते हैं, वो ड्यू का, और मैं उस पर कभी और डिस्कस करूंगा, लेकिन habitus, I guess। yes, 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 the man behind that. So I was watching a documentary which is titled, तुम भी देख सकते हो, कोई भी देख सकता है, Sociology is a martial arts. नहीं, so sociology is a contact sport, something like that, the title is. And I was thinking about जब वो उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि दिस इज सोशियोलॉजी एंड these are the things. So it is essentially the understanding of how societies and all of these things work. And my first thought was, I mean, of course, Bourdieu, as far as my engagement has been with him, seems to be less French than other French intellectuals, as in, less obscure, less metaphorical, less twisted in a sense. मेरा सबसे पहला थॉट ये था कि sociology aims to explain society, but this is the problem. Isn't the explanation of society also part of society? You cannot become asocietal, and this is very important. I think this is very interesting and important, दोनों चीज़। अगर मान लो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, से हमारे बीच कोई थर्ड इंसान बैठा हुआ है, well, there is one, Ayush with hair instead of Ayush without hair. Ayush without hair but still his charm. Let's say there's Ayush with hair and with his charm. So there's Ayush with hair, and I'm telling him how charming he is. The moment I tell him, and there's this story that there was a centipede, and then there was this another animal, and the animal was very jealous of how the centipede danced. And so the animal said, oh, when you dance, it's very nice when you move your legs like that. And because of that, the centipede became conscious. And the very act of knowing in what precise way the centipede's dancing is so Hey, तुम अपना यूज करो नेट, मेरा 90% उड़ गया।
हाँ बंद कर दो, मेरा चल रहा होगा अब। हाँ, तो आप सही बोले थे। वो खाली पानी पीने तक ही मेरे पास इज्जत थी, खाली पानी पीने तक ही मेरे पास इज्जत थी, उसके बाद इज्जत नहीं। उस टेबल के बाद मेरी इज्जत गायब। वो बोले पानी नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा। हाँ, इस पे आते हैं, क्या कह रहा था यार मैं, हाँ कि दिस आइडिया ऑफ द सेंटिपीड डांसिंग, ठीक है। सो बिकॉज द सेंटिपीड बिकेम कॉन्शियस, इट कुड नॉट डांस एनीमोर। डू यू अंडरस्टैंड दिस मेटाफर? कि someone made the centipede conscious of in what ways its dance was so nice, and because the centipede became conscious, now it could not dance anymore, right? It's like that fact जहाँ पे आप गाते हो एज अ किड और फिर मम्मी पापा कहते हैं बेटा इन अंकल के सामने गाना, बट यू कैन सिंग वेल, बट बिकॉज नाउ यूर कॉन्शियस ऑफ योर सिंगिंग, यू कैन नॉट सिंग वेल, आप अच्छा नहीं गाते हो। एंड सो let's say, I tell myself in what ways I'm charming. It is in that precise act of telling in what ways I'm charming, I'll not remain charming because now I know. But then, of course, I'm so superfluously charming that I still will be. So let's take another example. मान लो मैं तुमको बताता हूँ कि आदर्श तुम अगले 10 मिनट में यही करोगे, ठीक है। अब अगर मैं तुमको नहीं बताता, अगर मैं आदर्श को नहीं बताता कि तुम क्या क्या करोगे, तुम वो चीजें करते। पर क्योंकि मैंने तुमको बता दिया कि तुम क्या क्या करोगे, now you'll precisely not do that. So it's like the very act of knowing this, and I've been thinking about this for a long time. In philosophy, the aspect of epistemology acts as a frustrator for the knowledge of metaphysics. So epistemology acts as an obstacle to its own self. So if I tell you, Adarsh, what you're going to do, you won't do that. Precisely in that way, if sociology tells us what society is, then society in that very moment ceases to be as it was a moment ago. And so society changes in the very act of sociological recognition. Does that make sense? Ki a sociologist's recognition of how society is operating also becomes a part of society, and so it never becomes asociological. The development never remains asociological. So you can never truly completely explain society, because you'll always exclude, and this problem crops up everywhere. This is the problem of the observer not being accounted for in a theory. ये हम लोग हर समय देखते आ रहे हैं, जो मैंने पेपर लिखा था उसमें भी ये था, जब हम लोग फिजिक्स की बात करें तब भी उसमें था, जब तुम बात कर रहे हो अबाउट स्पेशलिटी उसमें भी है, और इसमें भी तुम देखो, when sociology talks about the society, it assumes that society to not have sociology in it, doesn't it? It does not assume कि society में point of time पे इसी precise चीज के sociological interpretation की knowledge नहीं होगी। तो अगर मेरा बॉस है और मेरा बॉस बहुत ही गुस्से में है, he does not talk to me properly and he is very rude. अब सोशियोलॉजी आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट, इट इज इनफैक्ट दोज बॉसेस जो वर्क कल्चर्स होते हैं वहां पे अच्छे होते हैं जहां पे बॉसेस आर नाइसर टू देयर एम्प्लॉइज, बट देन दिस वेरी फैक्ट is going to seep into society, making bosses generally more friendlier, so that the employees now deem their bosses to be more friendly, not as a boss but as a friend who they work under. समझ रहे हो चीज? But then because of this, there's going to be a resulting opposition, which is now because the employees know that the boss does this very thing does not work. You see, there's a sort of an ideological collapse यहाँ पे. Anyway, अब मैं इससे, हाँ, तो तुम्हारा जो तुम अरे हम लोग कहाँ से आए थे इस पे? हम लोग ओर्दो पे थे कि तुमने कुछ बोला था किसी लकान को, कुछ लकान को लेके, अच्छा हाँ, शायद द रियल पे, yes, the real. So what I think the real is essentially about is this act of knowing being an obstacle to its own self, right? It's like what goes wrong in knowing is the real, what goes wrong in symbolization is the real, what goes wrong, so what goes wrong in reality is the real. So there is no way I would equate reality with the real, would I? Because it is essentially what goes wrong in reality that is the real. I have a certain conception of reality, and what goes wrong is the real. At least one understanding of the real would be that. मैं एग्री कर रहा हूँ, पर फिर वही बात है ना, दैट आइडिया ऑलवेज दिस टेंडेंसी टू एस्केप द क्लासिकल थिंकिंग्स ऑफ रियलिटी. सो क्या कहते हैं, शायद फिर वो होती है ना कि एक ऐसी टाइम आ गई कि उसके बाद
रियल और रियलिटी के दो वर्ड्स को अलग सेपरेट करने पड़ेंगे. बट दिस ऑल्सो कैन हैपन इफ माई इंट्यूशन गेट्स अ सर्टन एपिस्टेमोलॉजी. मतलब मैं ये रेफर कर रहा हूँ कि आई एग्री इन अ वेरी स्ट्रेट हम्म सेंस. आई एग्री. हम्म हाँ, एक और बात करना था. लाइक आई ऑल्सो रेफर टू, एक दिन मैं कह रहा था ना कि ट्रुथ मुझे बहुत बोरिंग काइंड ऑफ लगता है, कि इट इज वेरी इनर्ट, यू नो. सो अगेन मैं रियलिटी वर्ड यूज करूंगा टू डिनोट something sort of absolute truth, because I does have a habit, I do have a habit of using the word reality. So Look, I understand what you're doing. What you're doing mhm, is something like, um, so reality is a sort of a transcendental term, isn't it? It does not depend on, oh, if I see the laptop, then this is the reality. If कल को मुझे पता चलता है कि लैपटॉप तो मेरे एक हाँ, मन घड़त कहानी थी, तो फिर मैं उसको रियलिटी बुला लूंगा. सो रियलिटी इज नॉट टाइड टू पर्टिकुलर्स, इट इज अ यूनिवर्सल इन इटसेल्फ. एंड सो हम्म, what you do is, the moment you know, oh, there's this real, तुम अब इस जो हम्म, typical signified है reality के, तुम उसको छोड़ के now you're using the real as the signified for हम्म, reality. ठीक है, that हम्म, makes sense, but um, still, in a traditional form, that would be very problematic. yeah, when you go into the academic entanglements, you would have नहीं, problems. एकेडमिक भी But नहीं, लेकिन अगर तुम चलो ठीक है, अभी इसमें नहीं घुसते हैं, पर हाँ, हाँ, तुम क्या हाँ, कह हाँ, रहे थे हाँ, अभी इसको? नहीं. एक और मैं बात कर रहा था कि आई वाज सेइंग, तुमने एक बात बोली थी ना कि अबाउट व्हेन यू इंक्लूड सोशियोलॉजी, और तुम बहुत एग्जांपल दे रहे थे कि डांसर को जब डांस कहने कहोगे, सो इट वुड बी सो मच कॉन्शियस. तो मैं कहूंगा कि अगेन दिस इन आइडिया ऑफ ट्रुथ, देयर इज दिस सॉर्ट ऑफ लैक ऑफ एटीट्यूड, या पूरी एपिस्टेमोलॉजी में एटीट्यूड नहीं रहती है. मतलब आप मैं एटीट्यूड को एक परफेक्ट वर्ड बना रहा हूँ, which can only be present in something which moves. Attitude is not something of a, क्या कहते हैं, एक vocabulary नहीं है वो. You are understanding that way कि हाँ, हाँ. बोलो बोलो. जैसे 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 अगर मुझे पेंटिंग दिखानी हो तो एक रिप्रेजेंटेशनलिस्ट फॉर्म है, मैं कोई रिप्रेजेंटेशन करके तुम्हें बता सकता हूँ, ठीक है. अगर कोई मीनिंग है, उसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इवन बहुत अच्छे हाईली फेनोलॉजिकल थिंग्स को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. एक मूवी भी एक बहुत ट्विस्टिंग वे में बहुत डायनेमिक थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकती है. बट एटीट्यूड, आई वुड से कि इट इज सो मच अगेंस्ट, अगेंस्ट नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इट वेरी मच रेजिस्ट रिप्रेजेंटेशन. इट इज आई समथिंग विच. हाँ हाँ, बोल क्या का बोलो, लेकिन जस्ट नो कि आई कैन नॉट गेट माई हेड अराउंड दिस. ओके. मुझको बहुत दिक्कत हो रही तुमको समझने में कि तुम एटीट्यूड से क्या मीन कर रहे हो. व्हाट वुड यू इवन मीन बाय एटीट्यूड, एंड हाउ इज इट escaping this representation. दोनों चीजों में बहुत दिक्कत हो रही है. लाइक maybe आई maybe maybe you're using it in such a personal sense अभी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है. लाइक आई वुड गिव एग्जांपल, शायद उसे थोड़ी डाइल्यूट कर पाए, लेकिन ठीक है. जैसे हेगेल का आंसर है, ठीक है. तो हेगेल ने सब्जेक्ट को कहाँ रखा, दैट इट इज ऑलवेज अंडर द कांस्टेंट अटैक्स ऑफ द नेचुरल इवोल्यूशन एंड सोशियोलॉजिकल इवोल्यूशन. तो वो एक हिस्ट्री के अंदर सब्जेक्ट को पुट कर दिया. तो एक एक और कांट ने क्या किया था, अच्छा वो उसको बहुत ज्यादा एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव दे दिया था, ठीक है, और हेगेल ने ला दिया. तो ये एक इस तरीके से बच्चा, एक बच्चा सोच रहा है, ठीक है, बैठ के, मतलब अबाउट इमेजिनिंग हिम सम सॉर्ट ऑफ ओवरशमेंच, ठीक है, या सुपर हीरो. और तुम उसे क्या करते हो कि एक प्लेग्राउंड में ला देते हो. अब वो बहुत हम्म डरता है बच्चों से, ठीक है. अब क्या होगा ना कि वो कितना भी थ्योरेटिकल थिंकिंग कर ले, बट ही हम्म हैज टू फेस द इमिड दिस पैनिकनेस ऑफ इमीडिएसी. पैनिकनेस वाई, बिकॉज उसे डर लगता है, वो गेम्स नहीं खेलता, ठीक है. तो वहां पे uh, एक एटीट्यूड का डिमांड कब आया, जब तुमने उसे प्लेग्राउंड में डाल दिया. बैठ के वो बगल में सोच रहा था, तो उसे एक तरीके से एटीट्यूड की जरूरत नहीं थी. लेकिन जब वो, पर वो भी तो एक एटीट्यूड था ना. उसका नहीं, नॉन पार्टिसिपेशन भी तो एटीट्यूड था ना. तो फिर तो नो, तुम एटीट्यूड से यूर मीनिंग समथिंग entirely else. Attitude is just a certain set of emotional and personal beliefs and certain set of emotional reactions we might have towards something.
So let's say if I am very angry when I look at this bottle, that's my attitude towards this bottle. If I'm very happy because, oh my god, water, I'm very thirsty, give me this bottle, then that's my attitude towards the bottle. Hmm. The kind of attitude you would mean is very different then, isn't it? Yeah, but it will retain some, basic things like it is a certain kind of response. ठीक है? तो ऑब्वियसली देयर विल बी थिंग्स ऑलवेज, ठीक है? एक इंटेलेक्चुअल कंडीशन की बात करते हैं या इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो वहां भी थिंग्स होंगी। लेकिन जब मैं एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ तो वहां के मोस्ट एक्टिव यूनिट्स क्या है? सोसाइटी, ठीक है? तो मैं जब किताब लिख रहा हूँ तो उस वक्त तो सोसाइटी एज ए यूनिट नहीं ना है। अगर इफ आई वांट टू हैव एटीट्यूड, दैट एटीट्यूड इज समथिंग एज अ रिस्पॉन्स टू द सोसाइटल डायनामिज्म, ठीक है? एक सोसाइटी की डायनेमिक्स होती है और वैसे एटीट्यूड को इमर्ज होने के लिए उस सोसाइटी के डायनेमिक्स का एक रिस्पॉन्स देना होगा। तो मैं रिस्पॉन्स कैसे दे सकता हूँ? बाई गोइंग इन टू दैट सोसाइटी, नॉट बाई जस्ट राइटिंग समथिंग इन अ पेन। ठीक है, या पेन लिखने वक्त में मेरा अराउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, बट वो नहीं है ना। मैं रिस्पॉन्स तो बहुत चीजों को दे सकता हूँ, बट अभी किसको देनी है? In the same sense, like I can respond to some imaginary bully by sitting at the corner, but that imaginary bully is not something to respond to with attitude. बहुत बंदे एक इमेजिनरी बुली को रिस्पॉन्ड कर लेंगे, बट जब सामने आ गया तो फट जाएगी। सो आई वुड से कि हाँ हाँ, मुझको बहुत दिक्कत हो रही तुमको समझने में। मतलब मैं ऑलमोस्ट एक तरीके, मैं तुम्हारा ये मैं एक चीज समझ रहा हूँ कि एंड मे बी इवन दिस आई मिसअंडरस्टैंडिंग कि to change society in any way, one must act instead of writing about it. This is one thing which I could identify. उसके अलावा मुझे ऑलमोस्ट कुछ नहीं समझ में आया। एंड आई थिंक कि अभी यहाँ पे मे बी इसको एक्सटेंड करना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं चीज़, क्योंकि अब मैं ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देने लगूंगा ना कि अरे यार, this is the third time you're explaining this to me and I still cannot understand it, and the conversation is going on, and then I'll perhaps have to edit it, and I'll have to hey bhagwan bahut hi tez awaaz aayi and other things. So, and then of course we had to complete that Edward Casey wala conversation. So let's just jump right ahead abhi ke liye. Leave this yahin pe. Maybe when I listen to this baad mein I'll get some ideas. तो तुम्हारा अच्छा, एक चीज जो वापस आते हैं एडवर्ड केसी पे, मुझे एक चीज उस पे कहनी थी, विच इज की टू बी इज टू, अरे यार हे भगवान, मुझको इसकी आदत डालनी पड़ी है ऐसे सीधा बैठने की, वरना फिर देखो ना, अभी जब मैं होऊंगा तो एक सर्टेन तरीके से आवाज जा रही होगी, अभी एक सर्टेन तरीके से आवाज जा रही होगी, जब ऐसे बैठता हूँ तो इट इकोस, बैकग्राउंड आवाज। हाँ। तो यस, एडवर्ड केसी का जो तुमने बोला, टू बी इज टू बी इन अ प्लेस, वेल आई कैन कंसीव ऑफ being without being in a place. And let me tell you, this is an idea I thought of 3 साल 3 साढ़े 3 साल हो गए होंगे अब। उस टाइम पे मुझको नया नया शौक चढ़ा था कि I'll develop a catchphrase of my own, like philosophers, one must imagine Sisyphus happy and existence precedes essence, all of that. तो मैंने सोचा था, what could be a good phrase? It could be properties precedes existence. क्यों? Because in order for something to exist in the first place, there have to be properties. I mean, so in some sense, properties are prior to the existence of things. And this is essentially तुम्हारा Platonic turn. I was essentially a naive Platonist, है कि नहीं? पर I could think, तो ये तो अब प्लेस को तुम प्रॉपर्टी से टाई अप कर लो, तो प्लेस ठीक है, I can think of things which might not be in a place. So I can think of the number 4. Where's the number 4? The number 4 for me is, but it's not there in space. So let's say whatever representational content we have, representational, not वो जो पेपर के सेंस में मैं representational content बोल, representational as in हाँ, मान लो there's a drawing of a horse. So there's the horse as
It really is in space, but then there's the immediate recognition of the horse as an appearance. समझ रहे हो? That is not in space, is it? बिल्कुल वैसे the number 4 is not in space. Anger is not in space. Do you get it? Sight is not in space. So these are concepts, right? These are concepts, but they're not in a place. We cannot think of them in a place. Am I understanding this correctly? Anger is not in place. How you say? Because anger is a concept. I do not imagine a particular person being angry. I do not imagine myself being angry, although some people would. But it is safe to assume that when I say anger, just like when I say the number 4, I do not think of a particular thing. It is a sort of a universal, which is a concept in itself. So essentially, these are what we might call representations of the world. Okay? These are representation of spatial things, but they're not themselves spatial. तो ये चीज it can be almost a refutation to Edward Casey's statement, maybe. So I would present an example, कि maybe जो स्पेशलिटी की एक सेटिंग है शायद ज्यादा ही चेंज करनी होगी. फॉर एन एग्जांपल, तुमने व्हाट्सएप पे भी मुझे पॉइंट आउट किया था अबाउट दिस ओकुलर सेंट्रिक पर्सपेक्टिव. ठीक है कि व्हेन यू आर सेइंग दैट द टच shows the intimacy, and eyes the when I said, yeah, the touch is about the immediacy and the eye is about the distance, then you said that you are doing this in an oculocentric paradigm. ठीक है. तो there was something which can be which could I have responded by referencing is that uh, there was a case study of the blind people. Okay, so they were able to uh, understand all the layouts, all those spatial structures which can be and which are mostly understood by visual features, like distance or some sort of angle, and they were able to draw, and how they were able to draw through the tactile understanding they got. So basically the author was later on claiming. एक बार रिपीट करना, एक बार सॉरी, एक बार रिपीट करना. So basically all those spatial features of layout, how things are along with each other, like one thing can be with a 2-meter distance from another object, or one object can be in a particular angle or orientation with another object. So there are different styles of spatial orientations which we mostly conceive through विजुअल स्टाइल्स. ठीक है. एक पार्टिकुलर एंगल मतलब क्या होता है कि कितना बेंडिंग है, तो ये बेंडिंग हम विजुअल तरीके से इमेजिन करते हैं. बट दोज पीपल जो कभी बचपन से ही अंधे थे, दे वर एबल टू कंसीव ऑफ इट, ऑल ऑफ इट. ठीक है. सो द ऑथर वाज लेटर ऑन गोइंग टू से कि एक्चुअली ऐसा उसने कुछ बोला था कि हम एक विजुअल परसेप्शन नहीं देखते हैं, हम हमेशा विजुअलिटी के थ्रू परसेप्शन देखते हैं. हाँ, ये था कि all of the essential features of the visual systems are already there in the perception. So अगर विजुअल सिस्टम हट भी जाती है ना, तो परसेप्शन के जितने कैटेगरीज है, लेआउट के, डिस्टेंस के, सब वो मेंटेन की जा सकती है थ्रू अदर सिस्टम्स ऑफ परसेप्शन लाइक टच और अदर थिंग्स. तो कनेक्टिंग इट विद द फर्स्ट पॉइंट जो था, हाँ, सेटिंग ऑफ स्पेशलिटी. इफ यू थिंक स्पेशलिटी इन दिस वे, अटक रहे हो, रुको. हाँ बोलो, कनेक्टिंग इट विद द स्पेशलिटी. So you were saying that there is some critique of spatiality. Can you summarize that critique in one line so that I can reference that? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही होगी. आवाज आ रही, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है. नहीं, वीडियो भी आ रहा है. Shit. वीडियो भी आ रहा है. ऑल्सो हमें 15 मिनट में कंक्लूजन देना पड़ेगा. नहीं शिट क्यों? अरे नहीं, वीडियो तो आ रहा है तुम्हारा. वीडियो आवाज आ रही है अब. नहीं, तुम्हारी आ रही थी.
वो कट रहा था बीच बीच में, अब ठीक है। अब ठीक है। हम्म। हे तो भगवान। तो तुम्हारा ये कि you talking about Edward Casey's observation that people who are blind from since birth, even they have these categories of visual recognition, कि they can recognize things visually. What were you saying about that? हम्म। सो द बेसिकली द कंक्लूजन वाज कि जितने भी स्पेशल सेटिंग होते हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं, अच्छा अच्छा। मैंने बस फिर से रियलाइज किया कि मैं आगे आके कैमरे के पास नहीं बोला। हम्म। जितने भी एक स्टाइल्स ऑफ लेआउट होते हैं, या जो भी स्पेशल सेटिंग होता है, उसको कोई विजुअल सेटिंग की जरूरत नहीं है। एक कोई भी परसेप्चुअल सिस्टम में वो आ सकती है। द ब्लाइंड पीपल वर एन एग्जांपल ऑफ दैट। So your notion of a speciality and what cannot lie in space needs to redefine. क्योंकि maybe when you are saying that something is not existing in place, sometimes I get the vibe that that thing cannot exist in visual kind of space. You are able to imagine a space, क्योंकि हाँ, ये कांट से मैं डिसएग्रीमेंट कर रहा था। कांट मैं कल पढ़ रहा था कि कांट ने बोला दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स। फिलोसफी क्या है? ओनली कॉन्सेप्ट्स के इंटर रिलेशन से डील करता है, ठीक है? तो मैं उसे एक फेनोमोलॉजिकल बैकग्राउंड के बिना इमेजिन कर सकता हूँ और डील कर सकता हूँ और डेवलप कर सकता हूँ। बट जब भी मैं मैथमेटिक्स इमेजिन करता हूँ ना, तो एक फेनोमोलॉजिकल जो सेंसरी इंटर रिलेशन, जैसे ट्राइंगल है तो सडनली एक तीन, एक होता है साइड्स नजर आ जाते हैं। तो मैथ हमेशा एक वर्ल्ड के परसेप्शन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है? सो आई हैड अगेन दिस क्रिटिक कि ऑब्वियसली जब मैं फिलॉसफी करता हूँ तो एक शिफ्ट्स होते हैं, टोपोलॉजिकल शिफ्ट्स होते हैं, एक चेंज ऑफ स्टाइल्स और ओरिएंटेशंस होते हैं। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों तो एक कॉमन परसेप्चुअल सिस्टम्स के एक लेआउट्स हैं। सो अगेन वो ऑथर का क्रिटिक जो ब्लाइंड पीपल का एग्जांपल लिया कि मे बी we need to understand speciality as the characteristics of this perception, which need not to be ocular centric to be spatial in a way. And if you conceive the speciality without beyond this oculocentric horizon, maybe the thing which you are mentioning, that they can't be in a place, they are in a place, maybe they are not in a oculocentric place. Um, to this, I would say, well, I can imagine something that is most definitely, non-spatial, which is music. Music. Where's the experience of music? Look, I don't know about this Edward Casey guy, ठीक है, लेकिन I'm starting to get this feel. Yes, but कुर्सी को भी थोड़ा सा आगे कर लेना, तो let me not shove my face into the camera as well, लेकिन but I'm starting to get this idea कि this person is very very apologetic of तुम्हारा typical physicalist intuitions. He might be talking is he like talking about pure phenomenology? The subject is pure phenomenology, right? Well, I guess you misunderstood things, because the later reference was not Casey, it was someone else. बहुत And बढ़िया, शाबाश। मैं चलो पहले ठीक है, बोलने वाला था, लेकिन ठीक है। तो ये जो भी आइडिया तुम बिल्ड कर रहे हो, लेट्स जस्ट रेफर टू द आइडिया एज राजू, ठीक है? सो आइडिया राजू सीम्स टू बी carrying a lot of physicalist intuitions, and it seems to be very apologetic of the same because और मेरा जो रिसर्च का लार्जर प्रोजेक्ट है वो यही है। और मैं मतलब बैट वाला एग्जाम, मतलब देयर इज दिस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल कॉग्निशन which I'll not discuss in detail, but essentially based off of that study, I'll ask you this question: how do we know that people from both, I mean, there are some people uh, both sehi who can still imagine images,
But that's because होता क्या है, in their cases the occipital lobe is still working. You see, the problem is here with many blind people. The problem is here, or the problem might be in both the places. The problem might be in the occipital lobe as well as the eyes. And of course, I'm only taking neurology seriously here because this might also this certainly is a correlation of some form of consciousness, or the mechanism of the same. तो होता क्या है in these people, the light goes in, this is faulty, right? But the light still goes in, forms an image, and now there's some problem between the transmission of the image, the image that is formed. Lekin sometimes by chance, are you following me till now? The eye is faulty, there's the occipital lobe which still works to some degree, and this image which is being formed, normally ये functioning नहीं है, नहीं जाता occipital lobe तक, लेकिन sometimes it does reach. So even though they are not conscious of a visual image, even though they're not conscious that they're seeing, unconsciously almost, there is um, an image which is being perceived by them. So if you put them under an fMRI, you'll see that there's not just activity in the four correlative parts of the brain to the senses, there's also activity in the occipital lobe, even though they're blind. This tells us that there's some residual. So based off of this, then they can, perhaps develop subconsciously, unconsciously, in whatever way, I don't know. I know now that they have this intuition of what spatial objects must be like. You take an organism which is truly, non-ocular, usko dikhta hi nahi hai. I don't think there would be any way they would conceive of this space as we conceive of it. And if you're talking about anything other than a physical space, then it does not even make sense to call it a space. Do you get it? Because space then only is reduced to a metaphorical term which points to something that is proper space. But there is no proper space, as we see, because space in itself is, well, space in itself is not this 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 big thing to which everything else is reduced to. So, I would say कि I can imagine of like purely non-spatial things without using space as a metaphor, which is music. You can think of music. Where is music? Where does music exist in space? जब मैं ईयरफोन्स में लगा के सुनता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ, clearly it is not spatial. It is some other type of space, but strictly speaking, I cannot call it space. So my other perceptual spaces are not really spaces, I'm saying. Okay, so when you referred to the line key, And if by you are the talking way, about by the the non way, by the way, this is your remark. इसके बाद you'll have to put up a conclusion because I won't be inquiring any further because this will just drag out. okay, तो okay. तुम इस पे अपना दो. So basically the first line, not first line, matlab in between lines you said that if you are talking about non-physical space, then I don't consider it a space. Then I would say कि मतलब ये तो मेरा starting point से ही था. मैंने physical space को कभी वो लिया ही नहीं, you know. So this changes the whole conversation because my whole way of thinking was always about non-physical spaces. Therefore, topology was very center of that. But topology is still spatiality proper because surfaces. Talk about the surfaces of music. Can you? You cannot. Topology can be done without visuality, I'm very sure, because tacticality has very much relation to topology at least. I cannot say about geometry, but touch. But sure. And it will lead to a bigger reference. I don't want to include in the discussion because the length is not that much. No. I'll look into it. Mhm. So yeah, I guess we should go on to the conclusion part. So अगर जस्ट एक समरी दें कि एडवर्ड सीजी कैसे एक
एक इवोल्यूशन को एक्सप्रेस करता है. सो ही सेज कि जो पोस्ट क्लासिकल ग्रीक से एक काइंड ऑफ न्यूट्रल स्पेस जन्म हुआ था, एंड इट वेंट ऑन टू द फाइनल मोड इन न्यूटन, was this physical space. And there was this fight of physical space which started from neo classical Greece to ended with Newton, और फिर तो फिजिक्स में वो पूरा पेनिट्रेट किया with the idea of place, ठीक है, which was there in pre-Socratics, but it emerged dynamically in Heidegger. It started as a response to the physical space by Kant. Shit यार. अब आ रहा है. आ रहा है. So the position of the idea of pure space, ठीक है, it started by the Leibniz himself, क्योंकि Leibniz का space बहुत relational था, but it went on to a very paradigmatic turn with Kant, जब Kant ने पूरा Copernican turn ला दिया. But the most final conclusion of space goes with Heidegger. So obviously, there is this Heideggerian space. Why I notion this Heidegger? Because Heidegger was at conclusion. So if you want to see the pure emergent form of the antithesis of the pure space of Newton, which was Heideggerian one. So, but again, as you said, when if you don't refer to space as physical space, which again in evolutionary history of Edward Kesey was result of the Newtonian space, which had some history, then it does not become a space. Then the question is, what is this place, this Heideggerian place, which started, as a response by the Kant or Leibniz, and it is as response to Kant. No, as a response by Kant and Leibniz to Newtonian final evolution of space, and it went on to modify in the French philosophers and French urban geographist. So again, if you think that a non-physical space can't be deemed a space, then what are these spaces which post Heideggerians are referring to? Well, we go. Well, we reach at another question, rather than answer, because you have this position, have a difference from Edward Kesey, in the sense that you talk about non-spaces and Edward Kesey doesn't, but then you have a common point that you don't believe in physical spaces, in the primacy of physical spaces. So does he. So then, I think the question is conclusion. I think that should be a good question to conclude with. Well, अब लोग बीच में इंडियन फिलॉसफी की थोड़ी. That was not needed, I would say. It was productive. ऐसा नहीं था कि it was हे भगवान. ये होता क्या है ना कि it was not like it was not like it was not productive. मे बी डिफरेंट टर्म, पर ये होता है ना कि जैसे तुम 1 से 10 पे जा रहे हो, लेकिन अब 1 से 1.1 1.11 1.111 पे जा रहे हो, देन यू कांट, जेनोस पैराडॉक्स आ जाता है फिर. So that मुझको बहुत तेज नींद आ रही है. मेरी आंखें जो है, मुझको ऐसा लग रहा है मेरी आंखों, एक आंख पे ये बैठे हैं, एक आंख पे वो बैठी है. The gaze of multiple people. ठीक है, खत्म कर देते हैं इसको. तो I'll just stop the recording right here.